And then I'm sorry that I was not in a position to move. I have some problem developed in my hip and knee. That is why I'm not able to walk easily. Hopefully, in a day or two, I'll be. And inshallah, I'll try my level best to be present during the midterm exam. Okay. This is what I sent you through WhatsApp. Can you see this screen where important topics list is there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So somebody said that सारी topics डाल दिए हैं आपने. It is not like that. When I say important topics, that means you have to focus on these things. For example, echelon form, reduced echelon form of a matrix with that rank of a matrix. Because this process independently problems can be given, or whenever you have to ask, you've been asked to solve a system of linear homogeneous or non-homogeneous equations, you have to use the echelon form. That is why it is an important topic. Followed by consistency criteria for solutions of a system of linear homogeneous equations and non-homogeneous equation. In linear homogeneous equations, we have conditions depending on the rank of the augmented matrix, whether you have unique solution, infinitely many solution, or no solution. And non-homogeneous equations, and you go for finding out whether there is only the trivial solution, that is 0, 0, 0 is there, or there can be non-trivial solutions. So this all is used in Gauss elimination method. Now, echelon form, reduced echelon form is used in the inverse of a matrix. What are the conditions on the inverse of a matrix? Which matrix can have an inverse? Let me remind you, a square matrix only can have an inverse. Besides the matrix, the square matrix, though we have not studied at this point the determinant of a matrix, but if the determinant of a square matrix is 0, it is called singular, and its inverse cannot be found. But when we discuss inverse of a matrix, we discussed it or the method of finding inverse. We augmented it with the identity matrix of the same order as the given square matrix and reduce it to reduced echelon form. I hope you remember the process and why that process work out. Okay, when a reduced echelon form is obtained, the given matrix A part becomes the inverse, becomes the identity matrix, and the identity matrix जो उसके साथ augment किया गया था, at the end that becomes the inverse of a matrix. Then we went on to study why it happens, and we introduced the idea of elementary matrices. You should have a good concept of elementary matrices because the list of elementary row operations that are required to reduce the augmented matrix AI into reduced echelon form, जितने भी आपको elementary matrix इस्तेमाल elementary row operation इस्तेमाल करने होते हैं, उनके correspondingly एक elementary matrix होता है.
उन तमाम एलिमेंट्री मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें तो उससे भी इन्वर्स निकल आता है. Then some proofs we discussed involving the inverses of matrix. These are the things that are the most important things in the first chapter. That means the first chapter, in fact, topics are up to this point. Then we went on to consider some issues in the study of determinants, for which we define determinant as a function, and from that function, we also considered a proper definition in terms of elementary products. But for working out determinant values for given square matrix to find the determinant, you use mostly cofactor method. So you need to know what is minor of a matrix, what is a cofactor. In fact, यहाँ पे जो मैंने लिखा है cofactor of a matrix, cofactor एक element of matrix का होता है और हर element का cofactor निकाल के हम एक matrix बनाते हैं जिसको हम cofactor matrix कह सकते हैं. So solving determinant using either row reduction or by cofactor of any row and column. You should have good idea about that. So determinant मालूम करने के लिए हमारे पास. Now, as far as chapter of determinant is concerned, there are more things, but I say that these are the things that you should focus. Syllabus है ना, revision हो रही है. So in the third chapter, we to start with, we considered vector algebra, but you note down that in this list of important topics, मैंने vector algebra जो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहा है कि norm of a vector important है, scalar product of two vectors, that is Euclidean inner product in R2, R3, or Rn. You should have good idea about that. And you should have good idea about how to find angle between given vectors, and fairly good idea about Cauchy-Schwarz inequality. And the only other thing that I have focused, and these are on for midterm only. If some topics I'm leaving out here that we have studied, that may be part of, or some of them may be part of the final exam. The last thing that I emphasize as an important topic, projection of a vector u in the direction of some vector v which is not zero. This is an important thing that we studied at the end, and the corresponding projection vector theorem. So, of course, a major part appears to be from chapter 1. Small part appears to be from chapter 2 and 3. Maybe for midterm, मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या मैं सारी डेरिवेशन ऑफ प्रूफ्स, बेटा जो सिलेबस होता है उसमें तो सारी डेफिनेशन ऑफ प्रूफ होती है. मैंने फोकस्ड आइडिया, फोकस टॉपिक्स दिए हैं, इनसे रिलेटेड प्रूफ्स अगर हैं जो वो जरूर पूछे जा सकते हैं. So मैंने कहा कि this is the list of important topics, and if I show you what we have been going through during the study of linear algebra this semester, can you see this sheet which is headed matrices and matrix algebra?
Yes, Yes, sir. sir. Good. तो भाई एक मैट्रिक्स क्या होता है? You know that's a rectangular array of real numbers. We are dealing only with the real matrices. So what is a row matrix or row vector? What is a column matrix and column vector? We have studied all these things. Two matrices can be equal in what condition? पहली बात तो है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए and each corresponding element should be equal so that the two matrices are equal. It's part of matrix algebra. When we can add two matrices, if their orders are same, then they can be added, they can be subtracted. Now, यहाँ पे मैंने आपको नोटेशन के बारे में कहा किताब में किसी जगह आपको एक एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स aij जो हम aij और bij और cij लिखते रहे हैं that can be written as this. Although I don't use this notation, but this notation means the element in the matrix A of ith row and jth column. But we don't use this notation mostly. And the scalar multiplication of a matrix by a number means every element aij of the matrix is multiplied by the scalar c, which should not be 0. So in this case, whatever be the order of matrix doesn't matter. Yes, matrix multiplication, and we have some serious issue. All of you have studied matrix multiplication before the university level. And you remember that in order that two matrices can be multiplied together, the number of columns in the first should be same as the number of rows in the second. And when you calculate the product, the way you know how to calculate product AP, which results into a matrix C, the order of the product matrix should be n by m, that is number of rows coming from first matrix and number of columns coming from second matrix. And I make you realize that जो तुम लोग process करते थे उसमें जो तुम एक रो को किसी एक फर्स्ट मैट्रिक्स से किसी एक रो को किसी कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे तो वो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे कि एक रो सेलेक्ट करो पहले मैट्रिक्स की, एक कॉलम सेलेक्ट करो दूसरे मैट्रिक्स की, इन दोनों को जैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उस तरह से प्रोडक्ट ले लें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें. So this can be written as rth row of A dot product jth column of B, or element wise is the product of corresponding elements added together, which can be written in the sum form this. So if A and B are matrices of this type, n by r pehla matrix, r by m dusra matrix, the product will be, of course, of n by m order. And each element here like C11 is first row dot product with first column, first row of first matrix, first column of first row of first matrix, second column of second matrix, and so on. So each product Cij is explicitly written here. Of course, you can do the examples yourself.
अगर हम मैट्रिसेस को स्केलर से मल्टीप्लाई करके एंड ऑल मैट्रिसेस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, उनको कांस्टेंट्स नॉन जीरो कांस्टेंट्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं. But I just did not discuss this idea in detail or at all in the class. Yes, this was discussed in the class. कि जब मैं एक मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता हूँ, the result is first row the column first element, second row into the column second element, last row in column. Now this can be broken down into a linear combination of columns of this matrix. Now, so example मैंने आपको यहाँ लिख के दे दी. अच्छा, ये जो files अभी मैं आपसे share करूँगा during this revision, these all files will be uploaded on the resources of LMS. So a given system of linear equations can be written as a matrix equation, and augmented matrix is formed. Linear combination form भी लिखा जा सकता है, but ultimately you go to make the augmented matrix, and here it is mentioned that in 1.3 जो है 1.1 और 1.2 का मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने क्लास में किया था. These are my old slides. मैंने जब आपसे अपने YouTube lectures share किए थे, उनमें ये slides इस्तेमाल की गई थी. Those are available on my YouTube channel. What is a square matrix? When rows and columns are same, number of rows and number of columns are same. Identity matrix, when the diagonal elements are 1, non-diagonal elements are 0. What's a diagonal matrix? Non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are not 0. Identity में diagonal elements 1 1 1 होना चाहिए. Diagonal matrix में diagonal elements जो हैं वो 0 नहीं होने चाहिए. एक आध 0 हो लेकिन सारे 0 ना हो. Scalar multiplication क्या होता है? Triangular matrix क्या होता है? Diagonal elements and above are non-zero, but diagonal elements के नीचे के सारे elements 0 हैं. तो triangular matrix एक upper होगा और एक lower होगा. What's a zero matrix? And a zero matrix is a matrix in which every element is 0. It may be square, it may not be square. A and B are conformable for sum and difference. हम पहले बात कर चुके. अगर इनके ऑर्डर सेम है तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी number of columns should be same as number of rows of the second. Matrix algebra, you can add A to B or B to A. So matrix algebra is commutative. Associativity for addition, associativity for multiplication, distributive for matrices of appropriate order. जब जहाँ sum हो रहा है तो इनका order same होना चाहिए. जहाँ प्रोडक्ट हो रहा है तो पहले एलिमेंट के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज. Same is the case here. So wherever multiplication and additions are mixed, we should remember that appropriate order should be there. In general, you know that A product B is not equal to B product A. पहला प्रॉब्लम तो ये हो सकता है कि A और B जो तो आप मैट्रिक्स ले रहे हैं वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल ही ना हो. अगर कन्फर्मेबल है भी, like square matrices can always be multiplied in both directions, still there is the result may not be same. So these are some algebraic properties of matrices. जैसे इसकी वजह से इस लिस्ट का नाम मैट्रिक्स अलजेब्रा रखा गया है. Somebody asked me about the proof of one of the vector axioms, जिसका मैंने जवाब भी WhatsApp पे दिया था. और अगर कोई मुझसे पूछता है कि जी इसके प्रूफ,
Of course, writing down A and B and C in terms of notations, we can develop the proofs also, but I do not emphasize on proofs of these. But for vector properties that I ask you, और एक list of property जो थी, वो मैंने as assignment भी आप लोगों से कही थी. I'll ask Kurat, my TA, whether you have submitted that assignment or not. Reduction of a matrix and its application. This is the row echelon form definition. Okay, first element in every row, if it's first non-zero element should be 1, or in general, the first non-zero element is called leading element. First non-zero element. First non-zero element called leading element is 1. ये हमारी convention थी, and हमने later ये भी कहा था कि some conventions are के first non-zero element जो है echelon form में हम 1 के अलावा भी accept कर लेते हैं. Any zero elements before this are leading. Before this leading element are called trailing zeros, and number of trailing zeros in a row should be at least 1 more than the number of trailing zeros in the previous. You should remember this well. And if you are asked to define echelon form or reduced echelon form, you should use appropriate words and clearly write down the properties of the echelon form, a matrix, or a matrix in echelon form, or a matrix in reduced echelon form. So reduced echelon form A should be in echelon form, and in the columns of the leading element of any row, all other elements below leading element and above leading element, they should all be 0. In the same way, there can be column echelon form and column reduced column echelon form we can define, but we did not use elementary column operations, जो के column echelon form के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. So that is not our concern here. What is elementary row operation? These are operations कि जब आप किसी मैट्रिक्स पर ये ऑपरेशन लगाते हैं इनमें से कोई, तो मैट्रिक्स जो है transform into a row equivalent form matrix. It is not equal to the same matrix, but we say that it's row equivalent form. What are the operations? Multiply each element of a row of a matrix with a non-zero constant. हमने यहाँ real और complex तो लिखा है, लेकिन हमारे इस कोर्स में सिर्फ real. So if k is not 0, then KRI means multiplying each element of ith row with the number k. Interchanging two rows of a matrix, Rij is the notation for that operation, means ith row goes to the jth place and jth goes to the ith place. What's the difference between row equivalent and elementary matrix? Okay. Let me try to answer this question. आपने पूछा है रो इक्विवेलेंट. अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 4 -2
और मैं इस पे एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाता हूं, फॉर एग्जांपल R R12, what happens? It becomes this. First row becomes second row becomes. अब A और ये हैं रो इक्विवेलेंट, जिसका सिंबल ये है। इसका मतलब है कि ये B मैट्रिक्स is obtained from matrix A using a single elementary row operation. ठीक है, रो इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ गया। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, elementary matrix, okay. Now, corresponding to this row operation, if I apply this, the same operation, then this will go into what? First row becomes second, second becomes first. So this is an elementary matrix. So if someone wants me, कि भाई इन दोनों के बीच difference क्या होता है? Row equivalent matrix means A or B row equivalent, so B is obtained from matrix A by applying some elementary row operations. And when somebody asks what is an elementary matrix, तो भाई elementary matrix, identity matrix पर एक elementary row operation लगाओ तो जो हासिल होगा वो elementary matrix कहलाएगा. Okay? So there are three elementary row operations. Okay. किसी एक रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और नंबर 0 नहीं होना चाहिए. किसी एक रो को किसी दूसरी रो से इंटरचेंज कर दें, प्लेस ऑफ रो चेंज. किसी एक रो के तमाम एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दें. इसमें ये सोर्स है, ये चेंज नहीं होगा. ये सोर्स, ये टारगेट है, ये रो चेंज होगी और jth रो की नई शक्ल जो है वो इससे आप. These are three elementary row operations that we have studied, and all the work during the course has been done using. In the same way, elementary column operations can be defined, but हमने इस कोर्स में अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया. Gaussian elimination method is the method for which in chapter 1 we have given too much emphasis. जो Gaussian elimination method है उसके major steps क्या हैं कि if you have a system of linear equation whose matrix form is AX is equal to B, इसका corresponding augmented matrix क्या है कि coefficient matrix के साथ राइट साइड कांस्टेंट का जो कॉलम वेक्टर है उसको मिला लें तो ये, अगर मैट्रिक्स ए में 4 कॉलम है तो मैट्रिक्स ए बी में 5 हो जाए. सो अ कॉलम इज एडेड एंड दैट कॉलम इज टेकन फ्रॉम द राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स. तो सबसे पहले तो आपने गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना है, उसके बाद आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है एंड देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म में लेकर आना है. इकोलॉन फॉर्म जो है उसके लिए हमने कहा कि जी जाहिर है जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे ये पार्ट पूरा का पूरा इकोलॉन फॉर्म में आ जाना चाहिए. where B is the echelon form of A part and B prime
has the new shape of B. Once you've got the augmented matrix into echelon form, अब आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वो आप दोबारा लिखना चाहें तो दोबारा लिख दें, और बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है जिससे कि आप अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो हासिल करेंगे। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में लेकर आए, किसी भी मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में लेकर आए, एंड देन काउंट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ऐसी रोज जिनमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो दैट इज द रैंक। रो रैंक, a row is a zero row if every element of the row is zero. अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो फिर वो जीरो रोज नहीं कहलाएगी, और वही रोज काउंट होंगी when you decide about the rank of the matrix. जितनी नॉन जीरो रोज हैं they make the consistency criterion non-homogeneous systems के लिए. So system is consistent if rank of coefficient matrix and rank of augmented matrix is same. One of the important thing. The system has, in this case, at least one solution. The system is not consistent or has no solution if rank of coefficient matrix is not equal to rank of augmented matrix. If the rank of coefficient matrix and rank of augmented matrix are equal, and they are also equal to the number of unknowns, the system has a unique solution. I hope you remember, I've been given emphasis to this. If rank of a coefficient matrix is same as rank of augmented matrix, but this rank is less than the number of unknowns, then the system has infinitely many solutions. और वो कैसे लिख के जाते हैं, हमने इस पे काफी बात की है। अच्छा, मुझे जो Zoom की सिस्टम मेरे पास है उसमें 45 मिनट से ज्यादा मेरे पास नहीं है, लिहाजा 45 मिनट होंगे तो ये सेशन खत्म होगा। मैं फिर दोबारा दूसरा सेशन मैंने शेड्यूल किया हुआ है। तो ओके, 1.1 में ये 16 क्वेश्चंस जो हैं ये नॉन होमोजेनियस के लिए हैं। 1.2 में जो है वो भी क्वेश्चंस हैं आपके पास। होमोजेनियस सिस्टम, coming to homogeneous systems, राइट साइड कांस्टेंट सारे जीरो हो तो हम ऐसे सिस्टम को होमोजेनियस कहते हैं। इसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा होता है, इसका मतलब होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। सो दिस इज कंसिस्टेंट सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया फॉर होमोजेनियस सिस्टम, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। जीरो सॉल्यूशन तो उसका होता ही है। The homogeneous system has only trivial solution if rank of the coefficient matrix is same as the number of unknowns. लेकिन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब आएंगे जब रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बिकम्स लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स। सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन, यू कैन से दैट दिस इज द सेट ऑफ कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया फॉर होमोजेनियस सिस्टम्स। सो नॉन होमोजेनियस के लिए आपको एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 13 to 24 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? When do you say that a matrix is invertible or has an inverse? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी जो हैं सेम ऑर्डर के हैं तो इनको एक दूसरे का इन्वर्सेस कहेंगे। अगर ए प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू बी प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, in which case we write down B as A inverse and A is then said to be invertible. Determining inverse of the matrix. हमने यहाँ पे आपको लिख दिया कि कैसे हम इन्वर्स निकाल रहे हैं। मैट्रिक्स ए लिया, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी, दिस इज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स।
उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया और इन दोनों को ऑगमेंट कर दिया, मैट्रिक्स ए को ऑगमेंट किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन से, और फिर इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में लाएं. If the reduced echelon form obtained is of this form, यानी A की जगह पे identity of an order आ गया है और identity की जगह कोई और मैट्रिक्स आ गया है, then this matrix B is the inverse of A. Alternate method में ये method है adjoint method, जो आपने शायद यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ा हो, which depends on determinants and cofactors blah blah. Adjoint of a matrix is Cij transpose, where Cij is the cofactor of the element Aij of A, and cofactor of Aij defined by this, where Mij, capital Mij, is the minor of the matrix, ith row और jth column को छोड़ के. तो जितने elements होंगे matrix में उतने ही elements होंगे adjoint में. Elements क्या होंगे? मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट का कोफैक्टर, और जो मैट्रिक्स बने उसका ट्रांसपोज, दैट विल बी एडजॉइंट. उस एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दें तो इससे भी इनवर्स निकलता है. हमने कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं दिया, लेकिन अगर आप लोग चाहें प्रैक्टिस करने के लिए और ऑल्टरनेट मेथड अगर मैं फ्री छोड़ दूंगा इनवर्स निकालें किसी भी मेथड से, तो फिर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं. Sir, could you kindly go through the proofs regarding inverses of matrices? I'll try my level best, or I can extend the next section. First, अगर A प्रोडक्ट B, ए और बी दोनों इन्वर्टिबल हैं, एक ऑर्डर के हैं, तो ए प्रोडक्ट बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स.